सो हेलो एवरीवन, दिस इज द लेक्चर ऑफ Pulsatilla Nigricans. तो इसको अच्छे से देखना है अपन को. वी हैव टू टेक आउट द एवरेज की नोट एंड देन विल स्टडी. ओके, तो लेक्चर अच्छे से देखना. द लेक्चर विल बी इन 2 parts और जस्ट यूज एलेंस की नोट. मैंने सब समझाया है और द इम्पोर्टेंट पार्ट्स पढ़ लो. ओके, लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. Hello everybody. So today we'll be starting with another remedy. The name of the remedy is Pulsatilla Nigricans. Okay. It is a very important drug of the first year syllabus. It's a polycress remedy and female reproductive system से mostly questions आता है. Okay, so चलो we'll start. So first of all, this is the picture of the Pulsatilla plant. Okay, it is also known as anemone. Anemone. The common name is anemone. This is the picture of the flower. It is basically a wind flower. It is known as a wind flower. Okay, and then before starting with the Allen's keynote and all, I'll be sharing one case to make understanding of this drug better. Okay, so केस किया है. 20-year-old girl, 20 साल की एक लड़की आई, comes to the clinic with irregular menses. She have irregular menses for the past 3 months. Okay, her periods are delayed. उसका periods late आते हैं. And when the appears the periods आते हैं, the flow is scanty, dark and intermittent. मतलब flow is not regular, flow बहुत कम है, पीरियड का फ्लो बहुत ही स्कैंटी है, बहुत कम है. सी कंप्लेन्स ऑफ हैवीनेस इन द एब्डोमेन. पेट में भारीपन है. एंड अ फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर ईटिंग इवन अ लिटिल. थोड़ा सा खाने से भी पेट भर जाता है. इट इज नोन एज सेटाइटी. वी हैव सीन दिस इन लाइकोपोडियम इफ यू रिमेंबर. एंड देयर इज नोजिया ऑल्सो. ओके, दिस वॉज द केस. और हर मदर रिपोर्ट सी क्राइज इजीली. मतलब उसको है वीपिंग टेंडेंसी. Remember these keywords, it will help us to understand the drug better. So weeping tendency रो देती है. Okay, especially when narrating her complaints. हाँ, and she says things like, doctor I don't know what's wrong with me, I feel so low. Okay, and इसमें क्या लिखा है? she prefers company. मतलब loneliness aggravates. loneliness is unbearable. अकेला रहना पसंद नहीं है उसको. and she cries after seeing her symptoms. Okay, सी डिसलाइक क्लोज रूम एंड बेटर इन ओपन एयर. हाँ, क्लोज रूम में शी डोंट फील गुड एंड बेटर इन द खाली, मतलब आप ओपन एयर में. और फिजिकली क्या, शी इज फेयर, ब्लू आइज, सॉफ्ट एंड डेलिकेट फीचर. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन आप देख सकते हो. शी इज फेयर, मतलब फेयर, ब्लू आइड एंड सॉफ्ट. वेरी ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, ब्यूटीफुल गर्ल. आई विल बी शोइंग द पिक्चर ऑफ द गर्ल ऑल्सो. एंड मॉडलिटीज के बेटर इन ओपन एयर एंड डिसलाइक इन ओके close room. And the most important one, she has no thirst even during fever. No thirstless. She is thirstless. Okay, she is thirstless. So based on this history, the doctor basically diagnosis was dysmenorrhea. Dysmenorrhea means painful menses. Dysmenorrhea means painful menses. Okay, so the doctor prescribed Pulsatilla 200 1 dose, and after follow-up she was good. So from this case, I'll be continuing with the drug. Basically, वही था. This was the case. So Pulsatilla was prescribed basically for the female complaints of delay in menstruation and heaviness in the abdomen, and based on the constitution, he gave Pulsatilla. Okay, so we starting with the drug. So see, basically this is the picture of the drug. This is the picture of the drug. We have to remember this. It might come in exams also. Okay, the next point is this is Pulsatilla lady. This is the Pulsatilla lady. Okay, this is the Pulsatilla lady. See, she has blue eyes. Okay, she has brown hair. Okay, and then pale face. She has a pale face. We'll be studying the constitution after a while. She has a pale face. So this is the constitution of Pulsatilla. Just remember this picture. She is weeping also. She is crying also. Okay, and very mild, very mild, indecisive. Very mild, indecisive women. Okay, so Pulsatilla, it is also known as women's remedy. Okay, and then okay, we'll be starting now with the introductory part. Okay, this is again another picture. We'll be coming to it later. Okay, so chalo. What is the source? The source is the vegetable kingdom.
obviously it is a plant. The common name is anemone or Pulsatilla pratinens, windflower. In Allen's keynote, anemone is given, so remembering anemone will be better. Okay, and the family is Ranunculus family. The family is Ranunculus family, and the proverb is Dr. Hahnemann. And miasm is Sora and Psychosis. Sora and Psychosis is the miasm. And temperament is phlegmatic and indecisive. Phlegmatic is basically means calm, introverted, calm, introverted like this. Okay, calm and introverted. Okay, the temperament is phlegmatic and indecisive, and the thermal is chilly or hot patient. Okay, in Allen's, if we study, you will realize Pulsatilla is the hot patient since the complaints aggravate in warm room. Okay, so this is the introductory part. We need to remember this. Now, what is the part used? The mother tincture is prepared from the whole plant. The whole plant, when flowering, whole plant is used for preparation of the drug. And the constitution, it is best suited to people of slow, phlegmatic temperament who are indecisive, of timid, tearful disposition. The whipping tendency, the person having a whipping tendency will be studying this constitution in a better way from the Allen's keynote, but just for understanding, we're studying from here. Okay, and we have to write the paper in this sequence only, like common name, constitution. Okay, that's the order I am teaching you. You have to write this only, and mostly we have to write Allen's only. Okay, so next part is ailments from कॉन्स्टिट्यूशन हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे फ्रॉम एलन से अच्छे से पढ़ेंगे एलिमेंट्स फ्रॉम मतलब बैड इफेक्ट्स मतलब कैसा बीमारी होता कैसे है ओके द बैड इफेक्ट्स ओके सो बेसिकली एलिमेंट्स कैसे होता है फ्रॉम ईटिंग फैटी फूड स्टार्ची फूड ओके जैसे फैट ज़्यादा जैसे बटर हो गया हाँ तो तेल का खाना ज़्यादा हो गया तो फैटी फूड आइसक्रीम ओके गेटिंग फीट वेट पैर गीला करना ओके इन जैसे नदी में हम चले गए ऑल दिस थिंग्स एब्यूज ऑफ मर्क्यूरी एब्यूज ऑफ क्यूनाइन ये सब मेडिसिन थे पहले यूज़ किया जाता था अभी दे आर नॉट वेरी मच यूज्ड ओके then warm infections indigestion ailments from also it is given in a better way in the Allen's keynote but headings I'm just teaching so this is important from here seat of action or space of action medicine कहाँ कहाँ काम करता है okay medicines कहाँ कहाँ काम करता है स्पेस ऑफ एक्शंस और सीट ऑफ एक्शंस और फार्माकोडायनेमिक्स सो कहाँ कहाँ काम करता है इट माइंड में काम करता है वेन्स म्यूकस मेम्ब्रेन टंग स्टोमक वावेल्स वेजाइना यूरिनरी ऑर्गन्स फीमेल ऑर्गन्स आईज ईयर्स if you can see it has a wide range of actions therefore it is known as polycrest सब जगह ही काम करता है मोस्टली बट मैंने जितना देखा है फीमेल ऑर्गन्स फीमेल केसेस में दिस इज प्रेस्क्राइब्ड अ लॉट ऑब्स एंड गायनी केसेस में इट इज प्रेस्क्राइब्ड अ लॉट not the sole remedy but अच्छा remedy है it is also known as a famous remedy तो mostly in females it is given okay doctrine of signature में ज़्यादा important किया तो एक लाइन अपन पढ़ेंगे it is prepared from windflower plant का नाम है as the plant grows in desert the patient has dry mouth हाँ patient has dry mouth thirstless होता है then the next point the plant needs less water to grow like why the patient is thirstless जैसे पहले बोला as the flowers are so delicate they change their direction by a draft of wind okay changeability of sign and symptoms is मतलब Pulsatilla is very changeable बहुत चेंज होता है विंड के साथ जैसे प्लांट बदलता है वैसे Pulsatilla का सिम्टम्स भी बदल जाता है okay so this is the doctrine of signature not very important 2-3 points are more than enough okay and then the pathology the pathogenesis just 2-3 points you have to write pathogenesis it is an important part कि how the drug acts okay drug क्या क्या करता है in its crude form so it acts prominently on all mucous membrane it acts prominently on all mucous membrane इतना तो अपन को क्लियर हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन में काम करता है साइनोवियन मेम्ब्रेन ओके आईज ईयर्स ओके सेट ऑफ ए कैथारल इन्फ्लेमेशन क्या होता है जैसे नाक से पानी निकलता है ना हाँ नाक से पानी निकलता है तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है दैट इज कैथारल इन्फ्लेमेशन म्यूकस सिक्रेशन
बढ़ जाता है तो तब इसको कैथाराइड इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. इट एक्ट्स ऑन द स्किन प्रोड्यूसिंग ए टिंगलिंग एंड बर्निंग टू द वेसिकुलर पुस्टुलर डर्मेटाइटिस. सो स्किन में करता है अगर टिंगलिंग एंड बर्निंग आता है बॉडी में, वेसिकुलर पुस्टुलर डर्मेटाइटिस आता है. So basically dermatitis is was inflammation of the dermis, inflammation of the skin. So skin में भी इसका effect होता है. तो basically like this pustules produce करता है. Okay, pustules. Done. Then it acts on the genitourinary tract, especially that of the females, where its action is very marked. This is very important. It acts on the genitourinary tract, especially that of the females, where its action is very marked, producing a contractive pain in the uterus. आई थिंक इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. फीमेल में काम करता है, यूरिनरी ऑर्गन्स में काम करता है, एंड एक्शन इज वेरी मार्क्ड. क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिव पेन, पेन प्रोड्यूस करता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टिव पेन, स्पाज्मोटिक पेन. ओके, ल्यूकोरिया आल्सो. ल्यूकोरिया इज बेसिकली व्हाइट डिस्चार्ज फ्रॉम द वेजाइना. ओके, एंड स्कैंटी डिलेड ऑफ एंड पेनफुल मेंसेस. मेंसेस कैसा था? वेरी पेनफुल, स्कैंटी, ब्लड बहुत कम निकलता है. ओके, दिस 3 पॉइंट्स आर क्लियर. मेल्स में क्या क्या काम करता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्सटिला इन मेल्स? इन मेल्स इट एक्ट्स अपॉन द टेस्टिस प्रोड्यूसिंग स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिस एंड पेन इन द स्पर्मेटिक कॉर्ड. सो टेस्टिस और स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या करता है? स्वेलिंग होता है. इट प्रोड्यूसेस स्वेलिंग इन द मेल्स. ओके, मेल टेस्टिस में स्वेलिंग होता है. द नेक्स्ट पार्ट इज एक्ट्स ऑन द जॉइंट्स, चीफली द नीज, एंकल, स्मॉल जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स एंड द फीट, प्रोड्यूसिंग आर्थराइटिक और रूमेटिक अफेक्शंस. ये इंपॉर्टेंट है. पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है विल बी स्टडिंग इज एंडेंस, इसमें क्लियर हो जाएगा. सो वैसे रूमेटिक पेन्स प्रोड्यूस भी करता है. ओके, देन अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज दिस. नो, यू डोंट नीड टू राइट सो मच. 3-4 पॉइंट्स are more enough. It acts on the ears, so it causes catarrhal inflammation, deafness and otalgia. Otalgia क्या होता है? ईयर पेन होता है. एंड ओटाइटिस मीडिया के लिए भी ये वेरी गुड रेमेडी है. ओटाइटिस मीडिया के लिए भी इट इज़ ए great remedy. Otitis media basically ear में discharge. Okay, so these 5 points you have to write in exam for a sequence way. एलन तारीख लिख देंगे तो नंबर थोड़ा सा मतलब घट के आएगा, जस्ट प्रॉपर हेडिंग्स में. पल्सटिला का अपन ने ड्रग कैसे कैसे काम करता है वो पढ़ लिया है. वी डन विद द डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर, वी डन विद द स्पेयर्स ऑफ एक्शन. ओके, दिस मच इज मोर देन एनफ एंड द इंट्रोडक्टरी पार्ट इज ऑल्सो done. Now we'll be starting with the Allen's keynote in a proper way. Okay, so we'll be starting. Chalo. So the common name is anemone. Okay, the family is Ranunculaceae family, and the prover was Dr. Henneman. The prover was Dr. Henneman. The meism is soda and psychosis. We have to remember that. Okay, so constitutions. Chalo. The constitution is adapted to persons of indecisive, जो decision नहीं ले पाता, slow होता है. Phlegmatic temperament मतलब काम, हाँ, introvert, like this, calm, introvert, phlegmatic temperament. Okay, sandy hair, pale face. Okay, sandy hair, blue eyes, pale face, easily move to laughter or tears. So मतलब indecisive होती है, बहुत mild disposition, like a female, जो not all the females, but she has a very beautiful face, pale face, because she is anemic. Also. She is anemic and easily move to laughter. उसको easily कोई भी हंसा सकता है और रुला भी सकता है. And affectionate, प्यार करने वाली है. हाँ, mild women. Then gentle and timid and yielding disposition. Timid मतलब क्या होता है? Low in confidence. Okay, timid is basically low in confidence. And yielding disposition, if I can see, there are many meanings. What I understood, yielding मतलब जो दूसरों को काम दे, मतलब अपना काम दूसरों को दे, तो दूसरों को अपना काम दे. One more meaning is she move, मतलब जो she follows others. लाइक कोई बोल दिया कि सीधा जाना है आपको, उल्टा नहीं जाना. इवन शी वांटेड टू उल्टा जाना था उसको, लेकिन किसी ने बोल दिया कि सीधा ही जाना पड़ेगा, तो शी विल बी गोइंग सीधा ओनली. ओके, सो दैट इज व्हाई यील्डिंग डिस्पोजिशन इतना बहुत है. एंड इट इज वुमेन्स रेमेडी. सो द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर. इतना तो क्लियर हो चुका है, आई गेस. द कॉन्स्टिट्यूशन इज क्लियर. Okay, the next part is the women is inclined to be fleshy with scanty and protracted menstruation. मतलब inclined to be fleshy, the women is healthy. मतलब
You understand the fleshy term, healthy type की है. वो scanty and protected menses. Okay, scanty menses होता है very less blood, and protected basically means extends for a long period of time. Extends for a long period. Extends for a long period. What is the meaning of this? So the meaning is basically क्या है, उसका periods बहुत दिन तक चलता है. कि द नॉर्मल पीरियड्स इज बेसिकली 5 to 7 days, बट इसका 14 days तक चलेगा, 8-10 दिन तक चलेगा, 15 दिन तक चलेगा, एंड सेकेंड फ्लो होता है. ओके, सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटल जनरल. मेंटल में क्या मिला है अपन को? द मेंटल सेज वीप्स इजीली, जल्दी रो देती है. शी इजीली क्राइज, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटेल हर एलिमेंट्स विदाउट वीपिंग. मतलब कुछ भी कंप्लेन होगा व्हेन शी इज कमिंग टू यू एज अ डॉक्टर, हाँ, वो जब कंप्लेंट बताएगी कि मेरा मेंसेस ये है, मुझे ये प्रॉब्लम है, शी विल बी क्राइंग व्हाइल एक्सप्लेनिंग द सिम्टम्स. सो दैट इज इट. विदाउट वीपिंग शी कैन नॉट डिटेल एलिमेंट्स, कुछ बोल ही नहीं पाती. एंड फील्स बेटर बाय कंसोलेशन. सो कंसोलेशन इमीडिएट्स, उसको तुम बोलोगे, सांत्वना दोगे कि ओके, इट्स ओके, एवरीथिंग इज ओके, सो शी विल बी फीलिंग बेटर. Done. This much is, I guess, it is done. Okay, so we are done with the constitution and we are done with the mental journals also. So physical journals will be starting. Especially it is given in the diseases of children and women. The first serious impairment of health is referred to the puberty age have never been when since. मतलब when she was in puberty, she was suffering from this problem: anemia, chlorosis, bronchitis, phthisis. Anemia is less in hemoglobin. Chlorosis also same like anemia only. Bronchitis is inflammation of the bronchus, and phthisis is basically it is a TB, tuberculosis. Phthisis is TB. So puberty से उसको ये सब बीमारी हुआ था, and after that she has never been well. उसके बाद से वो कभी ठीक हो ही नहीं पाई. Okay, and secretions from all the mucous membrane are thick, blunt and yellowish is an important line. Secretion from all the mucous membranes are thick, blunt and yellowish and green. हाँ, so ये कलर हमको याद रखना है, thick, blunt, yellowish, green. मतलब मोटा रहता है. ब्लैंड इज क्या होता है? ब्लैंड इज नॉट सॉल्टी, नॉट एसिडिक. ओके, नॉट एसिडिक टाइप. एंड येलोइश एंड ग्रीनिश टाइप का जो ये हमको फलगम निकलता है, द म्यूकर कथार जो निकलता है, उस टाइप का होता है. इफ़ यू रिमेंबर इन योर चाइल्डहुड, हाँ, कोई तो खा भी देता था. ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज सिम्टम्स आर एवर चेंजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. पल्सेटिला का सिम्टम चेंजेबिलिटी. देयर इज चेंजेबिलिटी. सिम्टम्स, नो सिम्टम्स रिमेन द सेम, दे चेंज अ लॉट. ओके, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स अलाइक. ओके, मतलब ठंडा भी सेम नहीं लगता, स्टूल भी सेम नहीं होता. हाँ, कोई अटैक, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, सिम्टम्स दे आर नथिंग, दे आर वेरी डिफरेंट. ओके, वेरी वेल, 1 hour वेरी मिजरेबल. द वेरी नेक्स्ट, अभी ठीक है, नेक्स्ट आवर ही शी इज़ वेरी मिजरेबल, मतलब बहुत कष्ट में है. अपेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी है. कॉन्ट्राडिक्टरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन क्या है? इग्नेशिया. सो कॉन्ट्राडिक्टरी है, सिम्टम्स कॉन्ट्राडिक्टरी होता रहता है, एवर चेंजिंग, चेंजेबिलिटी इज देयर. Okay, now this is an important part. The pains, rheumatic pains, it can be given in females. You know, rheumatic pains, all types of pains. Rheumatic pain, not a very generalized statement, but thoda sa just for remembering purpose. So pains are drawing, tearing, and erratic. Pain खिंचाव है, हाँ, काटा जैसा लगता है. हाँ, erratic is क्या? Erratic is basically changeable. चेंज हो जाता है. आज इधर दर्द कर रहा है, कल इधर करेगा, परसों इधर करेगा. ऑल दिस थिंग्स चेंजेबल. रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट. हाँ, वही बोला, रैपिडली शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द नेक्स्ट. और accompanied with constant chilliness. एक्सट्रीमली चिलीनेस है उसको, पेन भी है, ठंडा भी लगता है. द मोर सीवियर द पेन, द मोर सीवियर द चिल. जितना ज़्यादा दर्द होगा उसको ठंडा उतना ज़्यादा लगेगा. ओके, appear suddenly and leave gradually. आता जल्दी है लेकिन जाता बहुत लेट है. और टेंशन मच इंक्रीजेस until very acute, then let it up with a snap on first motion. इसका मतलब ये है कि if the person is sitting, like the person is sitting, okay, on first motion, जैसे वो बैठने से उठा, उस मतलब नहीं उठ पाता, the pain very much increases, the pain increases too much,
the pain increases too much while she is getting up. But after she is get up, the pain reduces. हाँ, the girl lets it up with a snap. मतलब पेन खत्म. इस टाइप का भी पेन. It is also seen in रस्टॉक्स. क्या अपन को समझ में आया? द पर्सन इज सिटिंग, जैसे बैठा हुआ है कोई पर्सन, फिर उठना है उसको. दिस इज फर्स्ट मोशन. ओके, एंड इंक्रीजेस अंटिल वेरी एक्यूट एंड लेट्स इट अप. जब फर्स्ट मोशन करेगा, उठ के चलने लगेगा, तो धीरे धीरे द पेन विल मूव अवे. ये एलास्टॉक्स में भी दिया गया है. एंड अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट, द थर्स्टलेसनेस इज नियरली विथ ऑल कंप्लेंट्स. द थर्स्टलेसनेस इज नियरली विथ ऑल कंप्लेंट्स, मतलब उसको प्यास नहीं लगती है. Another point, mumps metastasis to meme and testicles. जब parotid, what is mumps? Basically inflammation of the parotid glands. हाँ, inflammation of the parotid gland का inflammation of the parotid glands. So उसमें क्या होता है? Metastasis to the meme or testicles. So mumps spread to mame. Mame basically means breast. Okay, mame basically means breast, and testis तो you know only. Okay, and then the sleep is very important. See, this drug में अपन को ये constitution, the mental illness, physical illness लिखना ही पड़ेगा. And the next part is GI and female reproductive check. This much is important. It is a polycrest, और 10 मार्क में भी आ सकता है. Okay, the sleep is why she wide awake in the evening, does not want to go to bed. Evening को she don't want to sleep only. मतलब don't want to go to bed. First the sleep restless and sound sleep when it is time to get up. मतलब she sleeps very late, like 1 or 2 a.m. in the night. Okay, and सो नहीं पाती. तो पहला स्लीप जैसे 1-2 बजे सो गई, तो द स्लीप इज नॉट वेरी गुड. लेकिन वो उठ भी नहीं पाती. द लेटर स्लीप इट इज साउंड. लेट नाइट मतलब सुबह उठने वाला टाइम होता है, द स्लीप इज साउंड, लेकिन वो उठ नहीं पाती. अवेक्स लैंग्वेज अनरिफ्रेश्ड. लैंग्वेज बेसिकली लेजी. समझ सकते हो ना, द लेजी पर्सन, ऑल दिस थिंग्स. जस्ट पिक्चर एक बार देख लीजिए. एंड दिस वीपिंग डिस्पोजिशन वुमेन. ओके, शी इज वीपिंग डिस्पोजिशन, ब्राउन हेयर, ऑल दिस थिंग्स. ओके, कॉन्सोलेशन, ये कॉन्सोलेशन कर रही है. ओके, फिर कम सी स्लीपिंग ऑल्सो. इफ यू रिमेंबर दिस पिक्चर, आई थिंक वी आर गुड टू गो. दिस पिक्चर ऑल्सो अच्छा पिक्चर है. जैसे वीपिंग, बर्स्ट इनटू टीयर्स इजीली. Pulsatilla, timid, shy, easily influenced. कोई भी उसको कुछ भी कर सकता है. Easily burst into laughter. Wants window for open or fresh air. Mild and yielding disposition. Okay, this type of remedy basically it is Pulsatilla. ऐसा दिखता है. The drug picture look like this. And this is it. I guess we'll be completing the next part. This part in the next lecture. And 5-10 minutes का होगा. Okay, so I'll be stopping it here. Okay, bye.